Government Girls Higher Secondary School, Yaripura, an educational institute known for quality education, excellence, and better human capital formation. This institute was upgraded from secondary to senior secondary level in 2010. In a short span of time, it has reached to the pinnacle of success and the journey continues. Besides quality teaching learning environment, the institute provides ample opportunities for co-curricular activities, hands-on learning, and interaction with prominent personalities. Recently, Dr. Ataul Munim Tak, Personal Officer, Directorate of School Education Kashmir, paid a visit to the school and power-packed interactive session with students was held, wherein officer shared his personal experiences and valuable information and some practical tips to excel, lead, and contribute. Here is the recording of this very inspiring session for the benefit of general public. Thank you. As personal officer in Director. It has in fact been a great journey, a journey of learning, because we don't stop being students. I am a student and I am still learning. It has been a wonderful journey. You can continue with your questions. Thank you, sir. Your journey was really good. Sir, kindly enlighten us about your experiences while serving in the educational department. Education department is probably the largest department in the Union Territory right now. We have around 1 lakh employees, and as you know, we have around 15,000 schools across Kashmir division. And then we have students. We have around 7 lakh students enrolled in our schools in Kashmir division. Then we have another 7 lakhs in private institutions across the division. So roughly we cater to 1 lakh employees and around 15,000 schools. So it's a vast department and we get varied experiences while serving this department. We have officers like Tasadduq Hussain Saab, who is our director, very good officers in the secretariat, and we are moving in the right direction right now, and we are expected to raise the standard of education, because you might be knowing that we are actually fulfilling the Millennium Development Goals set by United Nations. With respect to education, it is equitable, quality education and learning opportunities for all. We are trying to live up to the expectations of the authorities, and definitely this year we have enrolled around 1,12,000 students in the start of the year. We are actually trying to work hard on quality education. We are trying to work hard on equitable education, and definitely we are progressing with respect to the educational indices. Sir, a girl of 18 years of age dreams of being an officer. How she can pursue her dreams? Please enlighten us. Yes, definitely, if I can become an officer, then all of you have more potential than me. You can very, easily become officers. For students, the best thing that you can do right now is to dedicate yourself to studies.
आज की डेट में straight away become officers. So you should select small goals for yourself. आज के दिन का गोल क्या है, एक महीने का गोल क्या है, एक साल का क्या गोल है. By selecting small goals, you will achieve, the greater goal. If the greater goal for you is to become an officer, then you will achieve it. For you, the simple advice is whatever is being taught to you during the day, you have to memorize it, you have to understand it, you have to practice it. And once you do it, this will be a small goal for you, and once you complete the small goal, you will definitely achieve bigger success. Sir, recently we celebrated Teachers' Day. From officer's perspective, what do you expect from a modern day teacher to provide quality education to the students? Teacher is the most respectable profession, I feel, because a teacher is entrusted with a small child. Parents entrust a child. For example, you have been entrusted by your parents to these teachers. They have a very big responsibility. They have a very big shoes to fill in. And what is the basic role of a teacher? Every student is bestowed with a special quality. That's why you have been created. Maybe some of you may be good at sciences. You may be, good orators. You may be good, everybody has a special quality. The most important responsibility of a teacher is to help students to understand what that quality is. Because, for example, some of you may be very good in writing, some of you may go on to become writers. If your English teacher identifies that student amongst you who is very good, excellent in writing English, he can guide him. Yes, your forte is writing English. So that is the basic role of a teacher. He has to help student to realize. That is the basic responsibility of a teacher. Sir, as NEP 2020 has been implemented, pick an officer in education department, how it is going to benefit society in general and students in particular. National education policy has not been implemented as of now. It has just started. We have to completely implement it by 2030. National education policy provides for a lot of things. National education policy, the first thing is early education and childhood care. Early childhood care and education. Normally, we used to enroll students from the age of 5, from the age of 4, from the age of 6. Now we have to handhold students from the age of 3. Now the model is 2 plus 3 plus 3 plus 4. Well, the second basic theme of national education policy is I will briefly share the statistics. 90% of the children who should be in schools, among, for example, we have 100 children, only 90%, 90 of them enter schools. Then once they reach to the level of 6, it gets reduced to 70%. Then once they reach 9, it gets reduced to 60%. So there is a pilferage. If 90 students enter a primary school, only 60 reach a high school. So 30% of students drop out in between. National education policy provides that every school, every child who should be in school, and the target is 2030. That means 2030 means जितने भी बच्चे स्कूल में होने चाहिए, they should get enrolled. Then we should handhold, we should understand the difficulties. क्यों बच्चे जाते हैं, drop out क्यों होते हैं?
because of a lot of things. Maybe अगर एक बच्ची drop out होती है school से, maybe she doesn't have a good washroom in the school. That can be the reason that why she is not coming to the school. There can be hundreds of reasons. There can be, she may be economically poor. She may not be able to be, she may not be supported by her family. Similarly, there can be hundreds of reasons. We have to identify these reasons and then act on them. Third theme of national education policy is basic numeracy and literacy. There is an estimate that 5 crore students across the country who are enrolled in schools do not know the basic mathematical operations like addition, subtraction. So we have to work on that. There are a number of schemes which have been conceived to fill these gaps. So national education policy promotes for a free culture. For example, earlier we used to have science stream, art stream, commerce stream. Now a student can combine different subjects. He can have physics with commerce. So there is a lot. Then, for example, somebody enters a college. College का होता है 3 years course. Somehow, because of n number of reasons, the student drops out. For example, BA second year. If he drops out, he will get a diploma degree. Otherwise, आज की डेट में अगर कोई second year में drop out होता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है. After 1 year, he will get a diploma degree. So there is a lot of flexibility. Then there is a 3-language, scheme. The curriculum will be taught to students in 3 languages. So there are a lot of things. Then there will be scope for teaching, craftsmanship to students in the schools. So a lot of things have been introduced. I hope that if it is implemented in letter and spirit, it will definitely yield good results. Thank you, sir. So we are really grateful that you came to our school and enlightened us with your journey. Thank you for spending your valuable time. Thank you, sir. I have, thank you very much. You have been a great host. What's your name? Sharika. Sundar Shaikh. Sundar Shaikh. Sundar Shaikh. Okay. Thank you very much. I have specially come here. I wanted that every student should be present here, but since we don't have, there's the space, I wanted to interact with all of you. And because I had a message for all of you, I have been associated with education sector for quite long. Not because I am posted in education. I have a special affiliation, special inclination with education department. I keep on interacting with students. I keep on talking about education. I have talked about responsibilities of teachers. I have talked about responsibilities of government with respect to education sector. I have talked about responsibility of parents with respect to education sector. Today I want to talk about responsibilities of students. As I said that we are everyone among us. That's why we have been created. ऊपर वाले ने किसी को फजूल में पैदा नहीं किया. Because we are bestowed with a special quality. और उस quality को to find out what is very special in you is your first responsibility. एक system है. If we have the ideal system मतलब you have the best teachers, you have the best schools, you have the best government to support. If the students are not good, if the students are not committed, इस सारी exercise का कोई भी मतलब नहीं बनता है ना? So you have a responsibility. First responsibility is to identify that special quality. जैसे मैंने कहा, because I tell you, आज की डेट में which is the latest iPhone? iPhone 13 Pro Max is the latest technology that is available right now.
iPhone 15 भी आएगा, iPhone 16 भी आएगा. Who will create that? Somebody of your age, है ना? आपकी उम्र में ही कोई हो. Maybe he may not be living here. He may be living in states. He may be living in some other country. लेकिन आपकी उम्र का ही कोई बच्चा होगा जो बड़ा होके, थोड़ा सा बड़ा होके आईफोन बनाएगा. And I tell you, you have the potential. उसमें कोई अलग तो नहीं होगा. He will not be having 3 eyes. He will not be having 4 ears. उसमें भी वही चीजें हैं जो आप में है ना. आज की डेट में हम बोलते हैं कि एड्स का कोई इलाज नहीं है. Somebody of your age will invent the cure for AIDS. और आप में भी वो पोटेंशियल है कि आप करोगे, है ना. All you need is to commit to what you are doing. अगर आप स्कूल आते हैं, अगर आपने कमिटमेंट की है कि मैं स्कूल जाऊंगी, मैं स्कूल में पढ़ूंगी, दिस इज अ कमिटमेंट. योर एनरोलमेंट इज अ कमिटमेंट. आपने स्कूल में, आप घर पे भी बैठ सकते हैं ना. आपने, यू हैव मेड अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ कमिंग टू अ स्कूल, so you should commit to it. I know there can be a lot of problems. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास पैसा नहीं होगा. I understand. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में कोई भी नहीं होगा गाइड करने वाला. Some of you may be first generation students. पहले किसी ने नहीं पढ़ा होगा. There can be a lot of problems. But none of the problem can stop you from studying. है ना? किताबें हैं आपके पास, टाइम है आपके पास. The most important asset that you have is time. पढ़ने से रोकने के लिए I don't think there is any problem. है ना? है कोई प्रॉब्लम? So then you have to commit. और कमिटमेंट करनी है कि भैया मैंने I have decided to study, I will study. I used to study in Kota, राजस्थान में मैं गया था brief period of time for this coaching कराते हैं ना. तो वहाँ you know our teacher used to tell us कि आप इतना पढ़ो कि आंखों से खून आ जाए. That was the standard. आंखों से खून नहीं आएगा ना पढ़ते हुए, आएगा नहीं आएगा. तो that is the level of, that's why you see people in Kota competing and getting selected for the most coveted colleges across the country. जो बाहर भी जाते हैं. तो I want you to commit. आपको मतलब डिसाइड करना है या नहीं आना स्कूल. You can take a decision, I will not come from tomorrow. लेकिन अगर आप आते हो, because you know what you do with your future will decide nothing less than the future of this country. है ना? हमारा फ्यूचर तो आप हो ना. हम लोग तो निकल गए. वी आर अबाउट टू यू नो वी आर टीचर डिसाइड हो गए कि भैया टीचर हैं, दे विल रिटायर एट एन एज. हो गया. जो आज की हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हल कौन करेगा? आप करेंगे ना. दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो व्हाट यू डू विद योर फ्यूचर विल डिसाइड नथिंग लेस देन द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. है. तो यू शुड टेक, बिकॉज आप जो करेंगे, जो पढ़ेंगे, जो लिखेंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आपका 2-3 साल मिस हो गए, 2-3 साल अच्छे से नहीं पढ़ाई थी, तो हम अगले 10 साल के बाद हमारे में कोई भी टीचर नहीं रहते हैं. We will not get teachers, we will not get doctors. आपके ये टीचर्स यहाँ रहते हैं, पास में रहते हैं. That is why they teach you very nicely. अब बाहर से कोई आएगा तो I don't expect to इतने अच्छे से पढ़ाएगा, इतने अच्छे से हमारे बच्चों को पढ़ाएगा, आपके बच्चों को पढ़ाएगा. ठीक है ना? And as I said, nothing can stop you. For example, आप में से कोई गरीब है. I was not that well off जब मैं पढ़ता. तो एक स्टेज आता है कि जो है गरीब बच्चा है वो सोचता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ किया नहीं. आता है कि उसने कोई मेहनत नहीं की, उसने ये नहीं दिया, मेरे पास बाकी बच्चों के पास ये है. डू यू वांट योर चिल्ड्रन टू से द सेम थिंग? वो नहीं बोलने चाहिए ना कल को कि मेरे पेरेंट्स ने पढ़ा होगा. यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी. आपके पास टाइम है.
एंड आई टेल यू कि आगे आप में इतना पोटेंशियल है जिसका कोई अंदाजा नहीं। ऑल यू नीड टू, जैसे मैंने कहा, छोटे छोटे गोल्स बना के बड़ा गोल अचीव करना है, ठीक है ना। अब एक बात है, यू नो, जब भी आप नौकरी की बात करेंगे, जब भी आप कंपटीशन की बात करेंगे, आपको बोलेंगे बहुत कंपटीशन है, बोलते हैं ना सब लोग। पता है आपको वो कंपटीशन? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दैट कंपटीशन? कंपटीशन क्या होता है? बोलो शाबाश। कैन एनीबॉडी डिफाइन कंपटीशन? नहीं, मुकाबला तो इट्स अ ट्रांसलेशन। कैन यू डिफाइन व्हाट कंपटीशन इज? बोलो, कोई भी बोलो। So just like we say कि ये बंदा अच्छा कर खड़े होके बोलो। मैं इससे मतलब बेटर करूँगा। I feel that's the competition, मतलब कि वो एक तरीके का वो एरिया बनाना कि नहीं, मतलब मुझे इससे बेटर करना है। That's the competition, कि अपने से आगे किसी को नहीं जाने देना। ठीक है, थैंक यू। मैं आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दिस कंपटीशन, है ना। अगर हम लोग, आपके प्रिंसिपल साहब हैं, आपके लेक्चरर्स यहाँ हैं, हम लोग डिसाइड करेंगे कि आज के बाद आप 10 घंटे पढ़ाई करेंगे दिन में, ठीक है ना। वी डिसाइड दैट एवरी स्टूडेंट विल स्टडी फॉर 10 आवर्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ये एक सर्वे हुआ है, अगर हम 10 घंटे करेंगे तो 95% of the students will not study for 10 hours. ठीक है ना? The students will study for 10 hours. कितने हुए? 95 plus 3 is 98. 2% of students will study for more than 10 hours. ये 2% कंपटीशन है सबके लिए, ठीक है ना। बोल रहे ना बहुत कंपटीशन है। एक सीट आई है, 50,000 एप्लीकेशन है। दिस 2% इज कंपटीशन फॉर एवरीवन एल्स। सो यू कैन बिकम कंपटीशन फॉर अदर्स, है ना। क्लास में होता है ना एक बच्चा जो सबसे अच्छा पढ़ता है, उससे सब लोग डरते हैं ना कि भैया ये तो टॉप करेगा, ये तो इसके वो 100 out of 100 आए। वो कंपटीशन होता है ना बाकी सबके लिए। So why don't you become a competitor? आप बन सकते हैं ना। आप ही कंपटीशन बन जाओ तो मसला हल हो जाए। There is no competition for you if you commit. फिर कंपटीशन की कोई बात नहीं। There is no competition for you. ठीक है ना? Then with respect to practice, मैं जो बोल रहा था ना आपको, practice करना है, practice मतलब जो आज आपको पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है, उसको मेमोराइज करना, नोट्स बनाना है, दैट इज प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस पे मैं आपको आई विल शेयर स्टोरी विद यू, है ना। मोहम्मद अली को आप में से कितने लोग जानते हैं? मोहम्मद अली वाज अ फेमस बॉक्सर, चैंपियन। मोहम्मद अली जब रिंग में जाते थे ना, when he used to go to a ring, तो different titles होते हैं, मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड। अगर उसके अपोजिट में मिस्टर वर्ल्ड भी होता था ना, तो वो उसको बोलता था यू आर होल्डिंग द टाइटल बट आई एम द चैंपियन। उसका ये मतलब he used to tell this to every opponent। तो उसको एक दिन बोला कि आपके अगेंस्ट तो टाइटल होल्डर था, व्हाई हाउ कुड यू से दैट आई एम द चैंपियन? उसने he said that because I practice। अब प्रैक्टिस का उसका मतलब क्या है? वो बोला the night before I enter the ring, I go to the ring for practice। ठीक है, I visualize कि मेरा अपोनेंट जो है वो भी अभी प्रैक्टिस कर रहा हो, ठीक है। He says that एक स्टेज आता है जब मैं थक जाता हूँ, I visualize my opponent will still be practicing. I get up again and practice. फिर एक स्टेज आता है कि मैं गिर जाता हूँ, थक के गिर जाता हूँ,
आई विजुअलाइज कि मेरा अपोनेंट भी अब थक के गिर गया होगा. Guess what he does again? He stands up and practice. वो बोलता है ये जो प्रैक्टिस मैंने की ये बराबरी वाली प्रैक्टिस थी मेरे अपोनेंट के साथ. इसके बाद जो मैं करता हूँ that is winning edge for me. That is why I say to him that you hold the title but I am the champion. है ना? तो प्रैक्टिस का कोई मुकाबला नहीं है और प्रैक्टिस में कोई पैसा नहीं लगता. लगेगा आप अगर एक चीज 10 बार रिपीट करोगे तो इट वोंट कॉस्ट यू एनीथिंग. So you need to practice, छोटे छोटे गोल रखो. I will be very happy. आप में से बच्चियाँ हैं, some of you qualify, you covered with Indian Administrative Services में आते हैं. आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहेंगे. Some of you become very good doctors. We have very excellent doctors from this area. आप में से doctors बनेंगे. I was previously I served in health department. हम लोग यहाँ डॉक्टर्स पोस्ट करना चाहते थे बट पीपल डोंट कम टू रिमोट लोकेशंस. अगर हमारे अपने बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे तो उससे अच्छा कोई भी नहीं है ना. एंड नाउ थिंग्स आर वेरी इजी. जब हम एंट्रेंस एग्जाम देते थे तो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल वेयर अराउंड 100. नाउ वी हैव थाउजेंड्स ऑफ सीट्स. बहुत इजी है. नाउ वी हैव people go abroad for MBBS. और बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि मतलब one student of 12th class this year went to Harvard University. He earned a scholarship free of cost. States में पढ़ने गए. कल को हम सुनेंगे कि he went on to become a scientist. He went on to become get a Nobel Prize. है ना. हमारे एरिया का हमारे इलाके का बच्चा. तो यू कैन डू इट ईजी. आजकल की दुनिया में वी आर कनेक्टेड. इट्स इंटरकनेक्टेड विलेज है ना. इंटरनेट अवेलेबिलिटी सबके पास है. आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं. तो आई विल वांट दैट यू प्रॉमिस. अपने साथ प्रॉमिस करो. बिकॉज जब हम एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं तो हम वादा खिलाफी कर देते हैं. अपने साथ प्रॉमिस आप हमेशा मिरर के सामने खड़े होंगे कि मैंने अपने साथ प्रॉमिस किया था कि आई विल कमिट टू एजुकेशन. तो आपको बुरा लगेगा अगर आप ये कमिटमेंट करेंगे. तो यू कमिट टू योरसेल्फ कि आज के बाद मैं पढ़ूंगी. एंड इवन इफ यू हैव लर्निंग गैप्स, आप में गैप्स होंगी, डेफिनेटली होंगी. गो टू ए टीचर. मुझे नहीं लगता अगर आप किसी का दरवाजा में नॉक करेंगे कि भैया मुझे पढ़ा लो, इवन इफ ही इज नॉट अ टीचर, टीचर्स की तो बात नहीं. तो ही विल टेल यू नहीं मैं नहीं पढ़ाऊँ, मैं नहीं सिखाऊंगा. नथिंग लाइक दैट है ना. तो आप ये वादा अपने साथ करेंगे कि वी विल कमिट टू आवर स्टडीज. और फिर आप देखो रिजल्ट. ठीक है ना. आज की मेहनत मतलब इवन इफ 10th में आपको लगेगा मैं बहुत मेहनत कर चुका हूँ, इसके रिजल्ट्स बाद में आएंगे. बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. ठीक है ना. और आज अगर आप मेहनत करेंगे बाद में कम करनी पड़ेगी. अदरवाइज यू विल हैव टू वर्क हार्ड ऑल योर लाइफ. ठीक है ना. बच्चियाँ जनरली क्या करती हैं, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद शादी कर ली और चले गए. They will have to they work all throughout their life. उससे अच्छा नहीं है अभी 2-3 साल मेहनत करके आराम करो, मजे करो, है ना. आई होप आई वॉज क्लियर एनफ टू कन्वे माय मैसेज. है ना.